Hello students, welcome again to our APS classes, and now today we will continue with our new chapter regarding the third class. And today we will take English subject, and today we will continue with our unit 2 for the English subject regarding the third class. And this is our unit 2, और unit 2 में जो हमारा आज की जो पोएम है बेटा, दैट इज रिलेटेड विद द वर्ड टॉक, एंड दिस पोएम इज बाय एलन फिशर. ये जो पोएम है बेटे किसके द्वारा है? एलन फिशर के द्वारा है. जो पोएम है इस जो पोएम के जो पोइट है दैट इज एलन फिशर. बर्ड टॉक. तो बेटे आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स को ओपन कर ले. ओपन योर बुक्स एंड दिस इज द पोएम एंड वी रीड दिस पोएम. आप भी मेरे साथ साथ इस पोएम को रीड करेंगे, वर्ड टॉक को. तो मैंने जो कहा बेटे अभी आपको कि जो इस पोएम की जो पोइट है दैट इज एलन फिशर. वर्ड टॉक, वर्ड टॉक बाय एलन फिशर. एलन फिशर. तो जो है बेटे एलन फिशर. So this is the poem, that is the word talk, and this is our unit 2, and now we read the poem, and let us start with our poem. Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden talking one day. Think about people, think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think, said the jay, are not people funny to be that way? Now दोबारा से हम रीड करेंगे इस पोएम को. Think, said the robin, think, said the jay, sitting in the garden talking one day. That means there is a conversation between the two words. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think, said the jay, are not people funny to be that way? अब ये जो पोएम है बेटे ये किसके बारे में? इसमें दो वर्ड्स, दो पक्षी जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो ये जो कविता है इस कविता में पक्षियों की एक अलग सोच के बारे में बताया गया है. पक्षियों की एक अलग सोच है किसके प्रति? मनुष्य के प्रति. उनकी जो एक सोच है वो बहुत अलग है. वो सोचते हैं कि जो मनुष्य हैं, लोग हैं, वो बड़े अजीब हैं. अब वो अजीब क्यों है? क्योंकि एक तो मनुष्य जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स, उनके कोई भी पंख नहीं होते हैं. दे डोंट ईट बिटल्स, वे कोई भृंग भी नहीं खाते हैं. दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके जो पंख हैं वो नहीं उगते हैं. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. अब ये जो पक्षियों की एक सोच है मनुष्य के प्रति, उसके पीछे भी एक तर्क है कि जो पक्षी हैं वो मनुष्य के प्रति ऐसा क्यों सोचते हैं. अब वो जो पक्षी हैं वो मनुष्य के प्रति ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि एक तो ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उनके बिल्कुल भी पंख नहीं होते हैं. दूसरा वो ये कहते हैं कि वो जो है वो कीट, भृंग जो है उनको वो खाना पसंद नहीं करते हैं, और उसके बाद उनके पंख भी नहीं उगते हैं. साथ में जो मनुष्य होते हैं वो ना तो तारों पर बैठना पसंद करते हैं, ना ही किसी वस्तु पर बैठना पसंद करते हैं. इसलिए जो लोग होते हैं वो
पक्षियों की नजरों में बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये जो कविता है वर्ड टॉक है, इसमें यही कन्वर्सेशन जो है पक्षी जो है वो मनुष्य के प्रति करते हैं कि मनुष्य जो है वो पक्षियों से बिल्कुल अलग है, और जिन तरीकों से वो अलग है वही उन्होंने इस चीज में डिस्कस किया है कि एक तो उनके पंख नहीं उगते हैं, दूसरा वो कीट को नहीं खाते हैं, तीसरा जो है कि वो तारों पर या किसी भी प्रकार की वस्तु पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से जो मनुष्य है वो पक्षियों की नजरों में बिल्कुल अलग है। So when the two words are in conversation with each other about the capabilities, what are the capabilities between the words as well as in the humans? So there is a conversation between the two words with each other about their capabilities. Now we shift to the next page, and do you think that the words find people funny? And let's listen to what the Robin and the Jay have to say. यहाँ पर जो दो words हैं they are Robin and Jay. अब यहाँ पर बेटे हम जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पोएम से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं बेटे? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग is fun. That is a word talk. Your first part regarding the exercise about the word talk is reading is fun. And your first question is name the two words in the poem. And before starting this exercise part, इससे पहले हमने जो poem है वो हमने की, and in the poem the two words are Robin and Jay. तो यहाँ पर जो two words है बेटे, name the two words in the poem, and the two words are Robin and Jay. These are the two words in the poem, Robin and Jay. Robin and Jay. These are the two words in the poem. Your next question is, what are the three things that people cannot do? आपको उन तीन थिंग्स के, वस्तुओं के नाम बताने हैं जो कि लोग नहीं करते हैं. What are the three things that the people cannot do? Your answer is people cannot grow feathers. Is this true? Because जो मनुष्य होते हैं उनके पंख नहीं उगते हैं. Second, people cannot eat beetles. जो लोग होते हैं वो भृंग या कीट नहीं खाते हैं. Third, people cannot grow wings. जो मनुष्य होते हैं उनके पंख नहीं उगते हैं. Your next question is, what do birds think of people? पक्षी जो है वो लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच है पक्षियों की लोगों के बारे में? Answer, birds think that people are funny. Birds think that people are funny. And why they are funny? As they are so different from the birds. That's why they are funny. अब funny क्या होता है? The meaning of the funny is अजीब. Funny का क्या meaning है बेटे? Funny, अजीब. Funny का क्या meaning है? अजीब. तो words think that people are funny as they're different from the words. That's why the words they think that people are totally different from the words because they cannot grow their wings. Next, we shift to the next part, and here we complete the reading is fun. And in the reading is fun, there are three questions. And now after the reading is fun, we shift to the talk time. What is the talk time? Imagine what two elephants, these are the two elephants here, this is the one elephant and this is the second elephant. That means in this picture there are two elephants, and imagine what two elephants would say to each other about people. यहाँ पर दो जो elephant हैं वो दिखाए गए हैं, and what would you say to each other about the people? वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? Let them talk about what people look like, what they eat, and how they walk. So these are the three questions between the two elephants: what people look like, what they eat, and next is how they walk. So what will be the criteria regarding the people look like, what they eat, and how they walk? So beta, imagine that two elephants would say to each other about the people. Let me talk about what people look like. So here
is what the elephant would say to each other about people. यही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है. तो यहाँ पर है what people look like. Look at them, they are so small. Look at them, they are so small. They are so small. They are so small. So what people look like? Look at them, they are so small. Second is what they eat. See, they eat so less. They eat so less. They eat so less. Next is how they walk. This is the third part. How they walk. This is how they walk. So how they walk? Look, they walk on two tiny legs. Look, they walk on two tiny means choti legs. Two tiny legs. Now next question is, let's find two things which you can do and the words cannot do. Let's find two things which can you do and the words cannot do. आपको दो थिंग्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो कि आप कर सकते हैं what the words cannot do. Tell the class. आपको वो क्लास को बताना है. Let's find two things which you can do but the words cannot do. Answer क्या चीज हो सकती है बेटे जो कि हम कर सकते हैं बट द वर्ड्स कैन नॉट डू? वो है आपका आई कैन स्टडी बट वर्ड्स कैन नॉट. हम पढ़ सकते हैं पर पक्षी पढ़ नहीं सकते हैं. आई कैन स्टडी बट वर्ड्स कैन नॉट. So these are the things which can we do what the words cannot do. Second जो है बेटा, I can have thoughts. हमारे पास विचार हैं but the words cannot have any thoughts. पर पक्षियों के पास कोई भी विचार नहीं है. So I can have thoughts but words cannot. So these are the two things which can we do what the words cannot do. The first thing is I can study but the words cannot study. Second is I can have a lot of thoughts in our mind what the words cannot have any type of the thoughts. So these are the two things which we can do what the words cannot do. Next is आपका next जो है बेटा team time है. Your next part is team time and in the team time there is an activity. Let's make finger puppets. This is the activity that is to be make finger puppets and your first part is draw your favorite word on a sheet of paper, cut and color. Your first part is draw your favorite word. आपको अपना कोई पसंदीदा पक्षी जो है वो बनाना है on a sheet of paper. After that cut and color it. Your second part is take a strip of cloth or paper. Second part में आप क्या करेंगे? Take a strip of cloth or paper. And in the third part paste the picture of the word you have drawn in it. आपको क्या करना है third part में? Paste the picture of the word you have drawn in it. And after that your fourth part is tie the two ends of the strip. आपको दो ends जो हैं उनको आपने strip करना है, tie करना है. Fix it on your fingers. उसके बाद आप fix करेंगे उसको अपनी fingers के ऊपर just like that. Your finger puppet is ready to talk. अब आपका finger puppet जो है it is ready to talk. And in the last point let your puppet fly and with your friends puppets. उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे? Let your puppet fly along with your friends puppet.
अब इसमें जो क्या है बेटे, फर्स्ट में लेट्स मेक फिंगर पपेट, तो उसमें क्या करेंगे, द स्टूडेंट हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड लेट द फिंगर या लेट द मेक फिंगर पपेट्स एंड अकॉर्डिंग टू मेक फिंगर पपेट द स्टूडेंट हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस. उन सब इंस्ट्रक्शंस को पहले क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज लेट्स राइट, उसके बाद उसको राइट करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू द साउंड्स ऑफ द वर्ड. सबसे पहले आपको लिसन करना है कि जो वर्ड्स की साउंड है वो कैसी है. मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स, उसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी है उन वर्ड्स की. आफ्टर दैट कौन कौन सी साउंड हो सकती है वर्ड्स की, कू कू कू, उसके बाद कू डू कुक, इस तरह की साउंड्स हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन द वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. वर्ड्स दिए गए हैं आपके पास, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि उनको आपको सेंटेंस बनाने हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस. योर फर्स्ट वर्ड इज नेस्ट. योर फर्स्ट वर्ड इज नेस्ट. नेस्ट. नेस्ट का क्या सेंटेंस बन सकता है बेटे, वर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, क्योंकि पक्षी हमेशा कहां रहते हैं, अपने घोंसलों में रहते हैं. सो वर्ड्स लिव इन द नेस्ट. लिव इन द, this is the first sentence, words live in the nest. Your second is, this is first, your second is water. Everybody knows that water is very important to everyone. Water is very important to everyone. Water. Birds drink water when they are thirsty. Birds drink water when they are thirsty. Birds drink water when they are thirsty. Next is chirp. C-H-I-R-P. Chirp. They chirp loudly in the morning. सुबह सुबह पक्षी जो होते हैं वो बहुत जोर से जो होते हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चिर्प करते हैं. They chirp loudly in the morning. नेक्स्ट इज चिर्प. चिर्प का क्या होगा बेटे सेंटेंस, दे चिर्प लाउडली. दे चिर्प लाउडली इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज फ्लाई. Birds fly above the houses and the roads. पक्षी जो है वो हमेशा घरों के ऊपर या फिर रोड के ऊपर जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं. So birds fly over the houses and over the roads. Next is sky. Birds always fly in the sky. पक्षी हमेशा कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Next is wings. Birds have wings to fly. Birds have wings to fly. Birds have wings to fly. यहाँ हम लिख सकते हैं birds have wings. Birds have wings to fly. Now we shift to the next part of your exercise, and the next part is, your next part is write the words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you. आपको rhyming words जो है वो बनाने हैं. For example, grow, no, throw. These are the rhyming words. Grow, no, throw. नेक्स्ट है डे बे. डे बे के बाद क्या आएगा, डे बे रेन.
डे बे रे, डे बे रे। नेक्स्ट है थिंक, थिंक का क्या होगा बेटे? थिंक, पिंक एंड लिंक, थिंक, नेक्स्ट इज पिंक एंड द नेक्स्ट वन इज लिंक, थिंक, पिंक एंड लिंक। आफ्टर दैट फनी, फनी का क्या होगा बेटे? सनी एंड बनी, सनी, सनी बनी, सनी बनी। आफ्टर दैट ईट, नेक्स्ट इज ईट, ईट का क्या होगा बेटे? नीट सीट, नीट seat, neat seat. After eat, the last one is sing, sing, cling, thing, cling and thing. So here these are the words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you, that is grow, know and throw. After that day, bay, ray, think, pink, link. Next is funny, sunny, bunny, eat, neat, seat, and the last one is sing, cling, thing, and next is say aloud. The last one is say aloud. अब कैसे करेंगे बेटे? Say aloud, think, think. Next one is this. Next is 10. After that, thin. Next one is that. After that, top. Next one is 7 is 3. Next one is do, do, and the last one is tank. So these are the words that say aloud. So here beta we complete the unit 2 for the class 3rd regarding the English subject, and the name of the poem is Words Talk. Word talk, how the words they talk with each other. And in this poem हमने यहाँ पर कविता का जो सार है वो भी पढ़ा है, and related all the questions or all the exercise part that is related with this poem. Here we complete. यहाँ पर हमने सारा जो इसका एक्सरसाइज पार्ट है इस पोएम से रिलेटेड जो है वो सारा कर लिया है। नेक्स्ट बेटे कल हम आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम कल दोबारा मिलेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को जो है बेटे अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज करें।